वंदे वंदे मातरम 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 वंदे वंदे भारतीय मजदूर संघ बीएमएस जिंदाबाद बीएमएस जिंदाबाद 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 बीएमएस जिंदाबाद 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 एनओपीडब्ल्यू जिंदाबाद 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 एनओपीडब्ल्यू जिंदाबाद 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 सीबीडब्ल्यू जिंदाबाद 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 सीबीडब्ल्यू जिंदाबाद 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 राष्ट्रभक्त मजदूरों एक हो राष्ट्रभक्त मजदूरों एक हो देशभक्त मजदूरों एक हो कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान जय 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 मजदूर संघ भारतीय मजदूर संघ जय 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 मजदूर संघ भारतीय मजदूर संघ मजदूरों का मजदूर संघ भारतीय मजदूर संघ मजदूरों का मजदूर संघ भारतीय मजदूर संघ नई जवानी केसरिया रंग मजदूरों का मजदूर संघ नई जवानी केसरिया रंग मजदूरों का मजदूर संघ बोलो थोड़ा सा आप सब भारत माता की जय भारत माता की वंदे 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 मातरम वंदे मातरम Happy morning to everyone assembled here. I am Beena BS, current treasurer of Canara Bank Workers Organization. I take the privilege of comparing today's event. It is my pleasure to welcome you all to our 10th General Body and All India Conference program. May I request the dignitaries to occupy their seats in the dais. May I request our President Sri Mahendra Nandi to escort Sri Lahar Singh Siroya, Honorable MP Rajya Sabha, to the dais. Now, may I request our General Secretary, Sri Anand Ayyappan, to escort the most successful and dynamic MD and CEO of our bank, Sri Satyanarayan Raju, to the dais. I request Srimati Rama Narayana Murthy to escort Sri Ashok Chandraji, our beloved ED, to the dais. I request Srimati Vidya Sunil to escort our financial sector Sahprabhari BMS Sri Ramnath Kiniji to the dais. I request Srimati H. Vandana to escort President Karnataka State BMS Sri N.K. Prakash to the dais.
It's our culture and tradition of our organization to start our program with national song Vande Mataram. I request our activist Srimati Nalini Sriranga to render our national song Vande Mataram. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनादकराले कोटिकोटि भुजैर्धृत करकरवाले अबलां केनो मा येतो बले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राण शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमारयी प्रतिमा गडी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणीं कमला कमलदल विहारिणीं वाणीं विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। बोलो भारत माता की। Thank you, Nalini ji, for the beautiful rendition of Vande Mataram, which filled our hearts with the glory of our motherland, Bharat. Now, I call upon Sri Anand Ayyappan, our beloved General Secretary, to kindly welcome the dignitaries and delegates to the conference.
भारत माता की। Good morning, everyone. We have assembled from all parts of the country to participate in the 10th General Body Conference of our organization. And we are very fortunate to have a galaxy of dignitaries on our dais. It is an utmost privilege to welcome them all to this event. First of all, Leher Singh Siroya ji, who is almost like a family member of our organization, and his support is always with our organization. Although he has a very heavy, busy schedule, he has very important positions in BJP. Even then, he makes sure that if any of our programs is there, he will help us or be present here for any need of our hour. So, on behalf of each one of our Karyakarta, I welcome Leher Singh Siroya ji for this event. Now I request our Balesha Singh from Varanasi to offer a shawl as an appreciation for his presence with us. I request our dear friend Krishna Joshi from Hubli to garland our honorable guest. And I also request our Sangeeta Bhattji to offer a memento as our affection towards him. We have, and we are very fortunate to have our beloved MD and CEO, Sri K. Satyanarayana Raju ji. Dynamic is the only word we can define for him. He always speaks with his heart, and he ensures that he implements the same with his brain. So that is the unique combination of person we have before him. And on behalf of each one of us, I welcome Sri Satyanarayana Raju ji to this event. Now I request Iqbal Singh ji to offer shawl to our beloved MD. Iqbal ji is from Chandigarh. Now I request Kishan ji from Delhi to offer a garland to our beloved MD. Also, I request Shyamala Prabhu ji. Shyamala ji is offering the memento. She is from Udupi. Next, we have our beloved Executive Director Ashok Chandra ji, who is also, as we said, always ready for us. He expresses his words close to our hearts. In every meeting he is present with us. And we are very fortunate to have him along with our beloved MD here. We thank you, sir, for your presence. And I request Anuj Tyagi ji to present a shawl to our beloved Ashok Chandra ji. Also, I request Genius ji to offer garland to our beloved ED. Also, I request Femi Thomas from Bangalore to offer our
love and affection in the form of memento. Next we have between us our beloved Prabhari of banking sector, Ramnath Kiniji, who is representing BMS between us. BMS is our mother organization, and I call upon Venkat Vijay Krishna ji to offer shawl to Ramnath Kiniji. Om Misra ji for garlanding. And Sinu ji to offer memento. We are also fortunate to have between us Sri N.K. Prakash ji, who is the State President of Karnataka BMS. I would like to call upon Suryakant ji from Patna to offer shawl to Prakash ji. Ajay Saini ji to garland Prakash ji. And Mumtaz ji from Bangalore to offer the memento. Now, it is my responsibility to introduce a few important persons who are not in dais but very important for our organization in all points. One is Vinod ji, the Honorable President of NOBW. Next is our dearest Dogra ji from Chandigarh. And last but not least, our beloved Mohan Kumtaga ji, who is the lifeline of this organization. And above all of this, the most important strength of an organization is each and every Karyakarta who attends every Karyakram and makes the organization strong. I welcome each one of you on behalf of our organization to this August function. Thank you. Thank you, Ananda Yappanji. Friends, there is a saying, coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success. It was indeed this mantra of working together which is being preached and practiced by this person. May I request Sri Mohan Kumtakar, our mentor, philosopher, guide, founder General Secretary of CBWO, former General Secretary of NOBW, who has taught us through his words and deeds that responsibility should come before right and success will be yours. I welcome him for the introductory remarks. Respected elders on the dais, of the dais, my dear brothers and sisters, I have been entrusted with the pious duty of introductory remarks. I will put it in three different, because here there are three important dignitaries. Along with that, first I have to introduce my organization. As she said, as the founder of this organization, way back in 1994 we started. So you may ask, there are so many unions in Canara Bank, why one more union was required? Anybody may feel that, no? Employees union is there, staff union is there, Congress union is there, federation is there. Why one more? If there was one union, it would have been very useful and better for Satyanarayana Rajuji. He could have talked only with them. Why so many unions are required? He may feel, even Ashok Chandra may feel, who is in charge of HRB. But we are not here as a union.
we are here as something else. You will come to know that, and you have experienced it. What is that? The very philosophical, ideological difference. Other unions you have seen, because when you come to UFPU forum, all are almost equal partners in UFPU. There, except our union, all other unions says, working class unity, Zindabad. They start with that. But ours is the only union which starts our slogan with Bharat Mata Ki Jai. There is no other union in our whole banking industry. In whole banking industry, the only union which shouts the slogan of Bharat Mata Ki Jai. But that means it is not just slogan. ये केवल नारा नहीं है, अपना जीवन का मंत्र है. We have taken Bharat Mata Ki Jai as जीवन mantra. It is not just making a slogan just out of that. For anything and everything, Bharat Mata is the deity, and we start our day with Bharat Mata, end our day with Bharat Mata. If Bharat is there, then Canara Bank is there. If Canara Bank is there, then Canara Bank workers are. If there is no Bharat, nothing. You can make out for today's context, very in Gaza, in Palestine, in Ukraine, what are happening, where the countries are going. But we are safe in this country because we belong to that great spiritual country called Bharat, and the deity of this Bharat is Mother India. We are the proud sons of this great Vishwamata. So that is our driving force. You may say then, okay, all right, you Bharat Mata ki jai, hum aap kehte rahenge. Lekin why you are in this field? Again, you will come to understand. They say, workers of the world unite. That is their philosophy. Other than our organization, their philosophy is workers of the world unite. मतलब सारे संसार के श्रमिकों एक हो जाओ. But where is our philosophy? Just jumbling of words. Workers unite the world. That is our philosophy. So, which means we are not for just bread and butter. Your salary, my allowances, I did not get, what is that, B allowance, what do you call it? Now the SWO B allowance, they keep on calling. What is that allowance, LFC? There are crores of people who don't have square meals. Who will worry for that? At least we have got a safe job, sacred job. So first, think of those people who don't have anything. So as workers, you have a great duty of uniting the world, not simple working class unity. It is nothing but a small, very, very congested, it is, आप क्या कहते हैं, उसको संकुचित कहते हैं ना, उतना सोच नहीं रहना चाहिए, बड़ी सोच रहना चाहिए, सारे विश्व को एक करने वाले, ऐसा सोच है. This is why we are here. और वहां कहते हैं, चाहे कोई मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो. That is the ordinary slogan of all communist-led unions. मतलब चाहे कोई मजबूरी हो, मतलब चाहे कैनरा बैंक बंद हो जाए, हमारी मांगे पूरी करो. नो, हम कहते हैं देश के हित में करेंगे काम पहले, उसके बाद में काम के लेंगे पूरे दाम. That is our slogan. We work for the nation, then we will go for that just and right. So कैनरा बैंक रहना चाहिए, तभी हमें कुछ मिलता है. आज के तारीख में आपने आपके सामने ही कहाँ है सिंडिकेट, कहाँ है कॉरपोरेशन, कहाँ है विजया बैंक, बाकी सभी आंध्रा बैंक सभी मर्ज हो गया है. आने वाले दिनों में कैनरा बैंक ऐसा ही रहना चाहिए. तो हमें क्या करना चाहिए? Those things, because we have to first safeguard our bank, which gives us bread and everything, our living, everything is on the bank. I have served this institution for 41 years. Not a single day, अरे बैंक भाड़ में जाए. Never in even in dream it doesn't come, because we love this institution. That is why in our book itself, slogans, we have entered there. Canara Bank's Amar Rahe. None of the unions make it. If it is given to some comrade, they will say, अरे आप तो चमचा हो. If you write good about bank, then they say you are banker. वो चमचा हो, you are all उनके मतलब उनके पीछे पिछलगू हो. नो, बैंक बचेगा तो हम बचेंगे, नहीं तो हम कहाँ, कहीं नहीं, कहीं के नहीं. सो दैट इज आवर फिलॉसफी. अपना फिलॉसफी है, पहले राष्ट्र हित, राष्ट्र बचाओ. दूसरा आता है उद्योग हित,
उद्योग मतलब बैंक, आखिर में आता है श्रमिक हित, that union. So this is the philosophy with which we have started, and that is why even though we are less in number, we are not bothered. It is just a number. We want member. Every member is strong enough here to safeguard the bank and the nation. That member we want. We don't want numbers. We don't, because I was General Secretary for 25, 30 years. We never came into majority, and I was not bothered also. Majority, अरे वो आने दो, लेकिन अपने विश्वास के, तो जिस विश्वास के साथ हमने इस यूनियन शुरू की है, उस विश्वास, उस धरोहर को हम बरकरार रखते हुए उसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, वही सोच के रहते हुए हमने इस यूनियन खड़ी की है, आगे जा रहे हैं। मुझे खुशी की बात है, यहाँ पर जो बैठे हैं, थोड़े लोगों का तो उम्र देखा तो उनका दे आर रिटायरिंग इन 2052, 2053, ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ पर। तब तक मैं तो नहीं रहूंगा, मैं ऊपर से देखता रहूंगा, अरे अच्छा भला फुला अपना ऑर्गेनाइजेशन अच्छा, मतलब वी आर थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स। यंगर जनरेशन, दे मस्ट कम फॉरवर्ड। व्हाई आई एम सिटिंग डाउन देयर? It is not till your death you are the general secretary. No, it is not a system here. One who is working only should lead. That is why our Anand Ayappan and Mahendra, Anand Ayappan has got still 20 years of service. He is our general secretary. And Nandi has got 10 years of service. He is our president. Such we have to groom. एक पद में बैठा तो पता है ना आपको, परवाना जनरल सेक्रेटरी till end, तारकेश्वर चक्रवर्ती जनरल सेक्रेटरी till end, now CHV, he is general secretary. Since how long? He has retired 20 years back. तब एडिंग मशीन था, अभी तो CBS सब कुछ आएगा, उसके बारे में कुछ पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है, because we have not worked on that. And such person is going to decide about our fate. It is not fair. You leave it to the working people. They know where the shoe pinches. So that is why such is the organization where we are not bothered about number. It is our member. They are the assets of the bank, sir. That is why I am introducing you our member. Coming to the introduction of guests, to start with, I must start with my good friend. उनका नाम में ही लहर है, वो लहर सिंह है। यहाँ बंगलोर में भाजपा का लहर जब आया था तब से मैं जानता हूँ। उन्होंने तो अपने लैम्ब्रेटा पर मेरे घर आते थे, स्कूटर चलाते थे। यहाँ चिकपेट में उनका दुकान था, एंड आई एम प्राउड दैट ही वाज आवर कस्टमर इन MG रोड कैनरा बैंक। वहां मैंने ही उनको लेके जाके अकाउंट अभी हमने करवाया था। सो ऐसे व्यक्ति, ही इज फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। टुडे ही इज ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। ही वाज द ट्रेजरर ऑफ द, ही वाज MLC ऑफ कर्नाटक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो जब आते थे मेरे घर में, आपको बताना ठीक नहीं बोले, फिर भी मैं रोक नहीं सकता। मेरा घर, मैं जब तक बैंक में था तब रिटायरमेंट तक एक घर में रहता था। वो घर था 10x20, उतना ही घर, एक चाल में, एस्बेस्टो शीट। इट नेवर बॉदर्ड मी, आई वाज स्टेइंग देयर ओनली फॉर 35 लॉन्ग इयर्स। उस घर में आते थे वो स्कूटर पे, और किनको लेके आते थे? येडियुरप्पा को उनके साथ में लेके आते थे। बाद में एक दिन ऐसा हो गया, मुझे वहां का DCP का फोन आ गया, आपके घर मधवानी जी आ रहे हैं, वो चाड़ में कैसे आएंगे, वहां सिक्योरिटी प्रॉब्लम। उनके लिए मैं घर नहीं बदल सकता हूं, अगर आना है तो आइए। मधवानी जी आ गए अपने घर पर। सो ऐसा, मतलब ऐसा अपना संगठन है। सो वेदर यू लिव इन अ पॉश बंगलो, वेदर यू लिव इन अ वेरी स्टाइल लाइफ, that is not the way. You are not looking at any person by his whatever position or whatever his money position, nothing. This is the only parivar where they see only their capacity, and they have seen it, and that they used to come. And here is Lahar Singh, who used to come to my house. We have traveled in scooter many years, and today I am very proud. वो MP, मतलब मैं ही खुद MP हूँ, ऐसा लगता है मुझे कि हमें कोई तो there is no difference between me and Lahar Singh. So such a personality today, he is not only that, he has taken oath along with Nirmala Sitharaman ji, because both have taken oath on the same day. They both represent Karnataka, यहाँ से कर्नाटक represent करते हैं, ये और अपने निर्मला जी। So दोनों एक साथ उन्होंने वोट टेकिंग, मैं गया था उस दिन वहाँ विधानसभा में, जब उनका वोटिंग हो रहा था, निर्मला जी और इनको मिलने के लिए, बधाई देने के लिए गया था। So such a person, down to earth. So welcome लहर जी, लहर भाई साहब, welcome sir. अभी रहा तीसरा व्यक्ति, उनका परिचय करवाना है। उनके तो परिचय थोड़ा तो अपने महामंत्री जी ने करवाया है, लेकिन मुझे लगा नहीं और ज्यादा, मतलब ज्यादा देने के लिए नहीं, वैसे वो नहीं चाहते भी,
लेकिन फिर भी अन्याय होता है. If I am not doing that, it will be injustice. It is none other than the Satyanarayana Raju. उनके बारे में बताने के लिए बहुत है, लेकिन टाइम लगेगा. लेकिन मैं छोटे में बताता हूं. आपको लगता है अरे एमडी बनने के लिए गॉड फादर चाहिए, वो वहां और एक शब्द है ना हिंदी में, जुगाड़ चाहिए. लेकिन हियर इज एन एक्सेप्शन. हु डजंट हैव गॉड फादर, हु डजंट हैव जुगाड़. केवल उनके परिश्रम के बलबूते सीएमडी एमडी बने हुए ऐसे सत्यनारायण राजू जी अपने बीच में हैं. उनके लिए गॉड फादर नहीं है, लेकिन उनके लिए गॉड मदर है. आई हैव रेड इन द आर्टिकल. वी आर वेरी, सीना बहुत खुश होता है, सीना तान के मैं कह सकता हूं. उनके बारे में एक आर्टिकल आया था. हिज मदर, शी वॉज, वो स्टिचिंग करके, सिलाई करके अपने बच्चों के पालते थे. ऐसे माँ के लाडला है ये. तो वहां से उन्होंने शुरुआत किया है. एंड द ओनली पर्सन who has reached to the level of MD by joining as a clerk. He joined as a clerk in the bank. क्लर्क होके ज्वाइन होके एमडी तक जाने का बिना जुगाड़, बिना गॉड फादर, ओनली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड मदर इज हियर. मोस्ट वेलकम नारायण जी, वेलकम सर. And we are in the bank is in the safe hands of him. We have nothing to worry. And especially, I told no, he joined as a clerk, so he knows where the shoe pinches. Clerical ko kya kamiyan. Every time, whenever he goes, you ask something. I say for clerks, we are only officers are coming and taking away. You ask for clerks because he is more worried about clerical. Because he knows, अगर आपका नीचे का ठीक है, नींव ठीक है, तो भवन ठीक रहता है. नींव है हम सभी, उसके लिए वो अपना परिश्रम देना चाहते हैं, वहां पर ध्यान करना चाहते हैं. ऐसे ही अपने बीच में अचानक आगे में खुशी हो गई, क्योंकि अशोक चंद्रा जी ऐसे व्यक्ति है. हाल ही में 19th नवंबर वी ऑलवेज सेलिब्रेट आवर फाउंडर्स डे. वी हैव आवर अम्मे बाल सुब्बाराव पे उनका फोटो डाला है यहाँ पर, अपने बैनर में ही रहता है, बाकी किसी भी यूनियन में नहीं रहता. बिकॉज अम्मे बाल सुब्बाराव पे for others, especially for AIBA and communist-led unions, he is what is he? He is a capitalist, because first capital he has put. So we are against capitalist. We will not go. We will not celebrate. But for us, he is Annadata. He is Annadata. He has served not only us, lakhs of families have been served by that great person. That is why we always remember him. We keep his photo. We garland. Our day starts with that. We have been celebrating Founders Day in Union Office every year right through 30 years. 30 साल हो गए, हर साल करते हैं. इसी साल में लास्ट नवंबर 19 को अशोक चंद्रा जी सीधे अपने यूनियन ऑफिस आए थे इसी प्रोग्राम के लिए, और दोबारा यहाँ आ रहे हैं. मतलब उनका अपना प्रति उतना कितना प्रेम है. So that has, and he is from the corporation bank. Our Kini knows him very well, and he is a wonderful HR man. Thanks to our MD sir, he has elected a wonderful person for HR who is really has that qualities of HR and all. So the very fact that his name is not printed there, he is not in the list. Despite that, he comes means he wants to be with you. That is his greatness. He wants to be with the employees. That is the HR quality. वहाँ ग्लास कैबिन में बैठ के HR चलाने वाले ऐसे नहीं है. वो आपके बीच में रहकर HR चलाते हैं. ऐसे अशोक चंद्रा जी को मैं आपके सामने परिचय करवाने के गर्व होता है. साथ ही साथ अपने किणी जी बैठे हैं. किणी जी तो अपने हम और उनके साथ ही अपना बैंकिंग करियर शुरू किए थे. नाउ ही इज द सह प्रभारी ऑफ BMS, फाइनेंशियल सेक्टर इंचार्ज. एंड देन प्रकाश, आई हैव सीन हिम राइट फ्रॉम द डे very old days when he was a little child also. Since then, now he is a big man. He is the president of Karnataka BMS. So very good. Such youngsters are coming up. Such youngsters are coming forward. That is the future of all of you. With these few words, let me conclude. Vande Mataram. Thank you, Mohanji, for the introduction of our dignitaries and giving the glimpses of the saga of Canara Bank Workers Organization. Let us invoke the blessings of Bharat Mata by lighting the lamp of wisdom by the dignitaries on the dais.
जिंदाबाद। राष्ट्रभक्त मजदूरों, देशभक्त मजदूरों, राष्ट्रभक्त मजदूरों, देशभक्त मजदूरों। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम मातरम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. प्रदेश और पूरे देश से पधारे हुए इस सम्मेलन में आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। आदरणीय श्री सत्यनारायण जी, श्री रामनाथ किन्नी जी, श्री प्रकाश जी, आनंद अय्यप्पन जी, महेंद्र नंदी जी एवं हमारे मित्र मोहन कुमटाकर जी और मंच पर विराजमान सब पदाधिकारीगण और भाइयों और बहनों, यह मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज आपके बीच में इस ऑर्गेनाइजेशन के 10वीं कॉन्फ्रेंस में आपको संबोधन करने का मुझे अवसर मिला है। मैं बहुत कोई विद्वान नहीं हूं और न मुझे कोई आर्थिक विज्ञान का मुझे कोई ज्यादा ज्ञान है। हम कल प्रतीक्षा करेंगे आदरणीय सु रामन्ना जी जो कल हमारा मार्गदर्शन करेंगे, तो सही मार्गदर्शन हमारा वो करेंगे। लेकिन आज आपके बीच में खड़ा हूं तो मुझे कुछ स्मृतियां मेरी है कनारा बैंक को लेकर के। जब मैं 17 वर्ष के युवक के रूप में 1965 में बेंगलोर आया था, उसमें कनारा बैंक की जो अट्टालिका थी बेंगलुरु के प्राइम लोकेशन में, तब से हम देखते आ रहे हैं। और मेरा पहला अकाउंट भी कनारा बैंक में खुला था। और मुझे स्मरण है उन्हीं दिनों में मैं जिनके परिचय में आया था वो थे वाईके राघवेंद्र राव जी। उनका विश्व हिंदू परिषद के किसी समारोह में मेरी मुलाकात हुई थी और मैं उनसे मिलने के लिए पहली बार कनारा बैंक के उस भवन में मैंने प्रवेश किया था। मैं आज उनको भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। और आदरणीय निर्मला जी आपकी वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, और मेरा सौभाग्य था कि मैंने राज्यसभा का सर्टिफिकेट भी उनके साथ ही लिया था। और बड़ी कुशलता से वो वित्त मंत्रालय का संचालन कर रही है। एक मेरा आयोजकों से कुमटाकर जी आपसे निवेदन है कि मंच पर किसी न किसी रूप में एक महिला का स्थान होना चाहिए था।
जब आदरणीय मोदी जी ने देश के खजाने का भार एक महिला को सौंपा है, हमने भी सौंपा है सर। और आप यहाँ जो पधारे हैं सब लोग देश से, आप लोग बैंक के कर्मचारी नहीं हैं, आप स्वयं आप बैंक हैं, क्योंकि आम आदमी बैंक को आपसे जानता है। आप बैंक का चेहरा हैं। एमडी साहब को कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आपको आम आदमी जानता है। और बैंक की छवि आपके ऊपर निर्भर करती है। ग्राहक के साथ आपका आचरण कैसा है, और आप जब ट्रांजैक्शन करते हो, कुछ लेन देन करते हो, तो ये महज लेन देन नहीं होता है, ये आप उस व्यापारी के या उस आदमी के जो आपसे लेन देन करने आ रहा है, उसके जीवन के साथ आप जुड़ते हो, उसके व्यापार में आप मदद करते हो, उसके गृह निर्माण में और किसी तरह से उसकी आप मदद करते हो, तो आपका उसके जीवन में भी आपका बहुत बड़ा रोल है। तो आप शायद ये बात को समझते होंगे, और मुझे खुशी है कि भारतीय मजदूर संघ ये तो अपने कर्मचारियों में ऐसे संस्कार बढ़ता है, जब ग्राहक आपके पास आता है तो आप ग्राहक को अपना आदमी समझ कर, अपना भाई समझ कर उसके साथ डील करते हो, और यही स्वस्थ परंपरा होती है, और यही आपका कर्तव्य है, और यही आपको और आपके बैंक को आगे बढ़ाता है। और क्योंकि बैंक का जो समर्पण होता है, कमिटमेंट होता है, उसका इंटीग्रिटी होती है, वो आपके माध्यम से ही परिलक्षित होती है। ऐसे बैंक तो कहीं जाता नहीं, लेकिन आपका पास सब आपसे मिलने आते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप आगे भी अपने जीवन में इन ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, और आप सही माने में आप बैंक की छवि भी आपकी सुधरेगी, और आपको भी एक आत्मसंतोष मिलेगा कि आप किसी के जीवन में आप सहयोग कर रहे हैं, किसी के व्यापार में सहयोग कर रहे हैं, किसी के संकट में आप सहयोग कर रहे हैं, और उसको बचत करने में, उसको फाइनेंशियली सुदृढ़ करने में आपका एक बड़ा योगदान है, ये आपको समझ लेंगे। साथियों, बैंक प्रणाली जो होती है, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति की रीढ़ होती है, बैकबोन होती है, और बैंक कितने अच्छे चलते हैं उसके आधार पर उस देश का ये उसका स्थिति क्या है ये परिलक्षित होता है। देश की स्थिति क्या है, और देश की फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, वित्तीय साख क्या है, ये बैंकों के माध्यम से पता चलता है। और ये आप पर निर्भर है कि विश्व में देश की साख कैसे बढ़े और बैंक सुचारू रूप से कैसे चले, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और इस ऐसे समय में जब आज आप हम ये सम्मेलन कर रहे हैं, एक ऐसे युग में प्रवेश कर लिया है हमने, जहां आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब 14 करोड़ अकाउंट्स थे, आज मैं समझता हूं करीब 50 करोड़ अकाउंट्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 वर्षों में, और पूरे देश को जनधन योजना के माध्यम से जो पूरे देश को आपके साथ जोड़ा है। अगर बैंक नहीं होते और बैंक के कर्मचारी अगर निष्ठा से काम नहीं करते, तो मोदी जी अपने बयान में सफलता मिलना उनको बड़ा मुश्किल हो जाता। ये आपका कमिटमेंट भी था। आज देश उस स्थिति में पहुंच गया है जहां हम पूरे जनधन योजना के माध्यम से 50 करोड़ लोगों तक हम पहुंचे हैं, और आने वाले दिनों में हम और भी लोगों तक पहुंचेंगे। ये आप पर निर्भर करता है। और एक
हम सब जानते हैं, कुछ छुपाने की बात नहीं है। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करता हूं, लेकिन कुछ पिछले इस 2014 के पहले 15-20 साल का ऐसा कार्यक्रम कालखंड निकला जिसमें बैंक जो है अलग ढंग से प्रभावित होते रहे और आप लोगों पर भी अनावश्यक दबाव बनता रहा और कहीं ऐसे लोगों ने बैंक का लोन ले लिया और बैंकों की स्थिति लड़खड़ाने लग गई। ये आप और हम सब जानते हैं, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि सत्यनारायण जी भी जानते हैं किस तरह के दबाव में काम करना पड़ा रहा होगा। हम व्यापारी हम भी जानते हैं किस तरह की ताकतें उस समय काम कर रही थी और बैंकों को प्रभावित कर रही थी। 2014 के बाद में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभाला तो सबसे पहले पूरे देश की जनता को जनधन योजना के माध्यम से बैंकों से जोड़ा और उसका एक और फायदा यह हुआ, जो सरकारी योजनाओं में जो पैसा जाता था पहले एजेंटों के माध्यम से जाता था, राज्य सरकारों के माध्यम से जाता था, वो पैसा डायरेक्ट लाभावंत के पास जाने लगा। और ये कैसे संभव हुआ? या बैंकों की वजह से संभव हुआ। तो ये सोच जो प्रधानमंत्री की रही, और यही नहीं, जब 2014 में अधिकांश बैंक एनपीए से पीड़ित थे, कई तरह की समस्याओं से ग्रस्त थे, उनका पैसा रिकवरी नहीं हो रहा था, लोग खा के आराम से पैसा बैठे थे, आप कुछ भी उनको कार्रवाई कर लो, पैसा आपका आता नहीं था। तो 2014 में आने के बाद में प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कड़े कदम उठाए कि और उनमें ऐसा सिस्टम को टाइट किया, जो पैसा बैंक का लूट रहे थे वो लूट तो रोकी ही, साथ में जो लूटा हुआ पैसा भी उन्होंने वापस इकट्ठा करने का काम किया। और आज सत्यनारायण जी आप जानते हैं कि बैंक प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ रही है, बैंकों को समझ में नहीं आ रहा उस पैसे का क्या करें। इतना पैसा आज बैंकों में आ रहा है और आज ऐसे मौके पर विश्व में हमारे बैंकों की साख बढ़ी है। और मैं समझता हूं कि ये जो हमारे को तीसरे स्थान पे लाना का है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात हो रही है, वो बैंकों के माध्यम से ही संभव है। और आज हमारे को बैंकों की प्रतिष्ठा विश्व में हो रही है और हम समझते हैं कि आगे हमारे आने वाले बैंक, और कनाडा बैंक का तो मैं विशेष उनको अभिनंदन करना चाहूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद में इन सब बैंकों के बीच में जो कनाडा बैंक जो है बहुत आगे बढ़ के आया है। और कनाडा बैंक ने जो, और मुझे इसलिए भी गौरव है और इसलिए भी आज मैं बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूं कि कनाडा बैंक कर्नाटक का बैंक है, क्योंकि कर्नाटका बैंक, सिंडिकेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ कर्नाटका। अब जब हम कल मीटिंग में साथ में थे तो किसने पॉइंट आउट किया कि कर्नाटक का नाम तो कभी काफी बाद में रखा गया था, शायद 75 में आसपास कभी, लेकिन कर्नाटका बैंक ने अपना नाम 100 वर्ष पहले रख लिया था, 70-80 वर्ष पहले। तो ये मुझे और कनाडा बैंक जो देश की प्रगति में जो सहयोग करता रहा है, मैं कनाडा बैंक का और आप उनके माध्यम से आप सब कर्मचारियों का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपकी निष्ठा और लगन से ये संभव हो सका है और बैंक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि ये भावना कहीं कम ज्यादा हो जाती है यूनियनों के आपसे स्वार्थ की वजह से। मैं किसी यूनियन का नाम लेना चाहूंगा, लेकिन कर्मचारियों में एक अलग तरह की भावना आ जाती है। लेकिन आप, मैं समझता हूं आप ये समझेंगे, जो भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए जो हैं, ये समझेंगे कि ये बैंक हमारा है और ये कस्टमर मेरा परिवार का सदस्य है। जैसा मोदी जी ने नारा दिया है कि पूरा देश मेरा परिवार है, तो ये कनाडा बैंक के आप परिवार के सदस्य हैं। आप कनाडा बैंक के महज कर्मचारी नहीं है, और ये कनाडा बैंक का आगे बढ़ना या बैंकिंग व्यवस्था का आगे बढ़ना, ये आपका और हम सबका कर्तव्य है और इसमें आप और आगे बढ़े, ये मैं आपको शुभकामना भी देता हूं और आपसे ये अपेक्षा भी करता हूं। और ये बैंक प्रणाली जो है, ये आप और हम तक सीमित नहीं है,
ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो सपनों का साकार करने का एक माध्यम है और उनकी देश की आशाओं और अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है। ये आपके माध्यम से ही पूरा हो सकता है। मैं आज आपको ये अंडरलाइन करना चाहूंगा। इसलिए आपका इस आर्थिक स्थिति में देश की सेवा में आपका योगदान सबसे ज्यादा है, मैं समझता हूं, क्योंकि आप करोड़ों रुपए आते जाते देखते हैं, लेकिन आपके मन में लालच कभी नहीं आता है। ये आपका जो स्वभाव है, और आपकी तरह मैं भी कर्मचारी हूं, इसलिए हूं कि मैं पार्टी का ट्रेजर रहा हूं 17 वर्षों तक। हमने खूब पैसा आता जाता देखा हुआ है, लेकिन हमारी पार्टी का एक पैसा भी व्यर्थ न जाए, ये बात का ध्यान रखता हूं। मोहन कुमटाकर जी को शायद मालूम है, और यही आपका कर्तव्य होता कि ये पैसा देश का पैसा है, आपका और हमारा पैसा है, हमारे भाई का पैसा है। इसका दुरुपयोग नहीं हो और उसमें आपकी सावधानी ही काम आएगी। कोई आदमी, गलत आदमी बैंक का पैसा नहीं ले जाए, ये आपका कर्तव्य बनता है। और बीएमएस के बारे में तो कहूंगा कि ये सारी प्रतिस्पर्धा के बाद भी और काफी कठिनाइयों के बीच भी भारतीय मजदूर संघ आगे बढ़ता रहा है, और धीरे धीरे जब बाकी यूनियनें लुप्त होती जा रही है, भारतीय मजदूर संघ और आगे बढ़ रहा है। आज इस मौके पर मैं भारतीय मजदूर संघ को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं उद्योग में, बैंक में, किसी भी क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ जो एक स्वस्थ परंपरा कायम करता है, मजदूरों और मैनेजमेंट के बीच में एक स्वस्थ वातावरण पैदा करता है, अपने स्वार्थ को सर्वोपरि नहीं रख करके, जो ये आप जो देश के योगदान में कर रहे हैं, मैं समझता हूं निस्संदेह आदरणीय मोदी जी को इसमें बड़ा सहयोग मिलेगा। उनके सपनों को और विकसित भारत को बनाने में जो 2047 का जो सपना हम देख रहे हैं, उस सपने को साकार करने में मोहन कुमटाकर जी का हम रहे नहीं रहे, लेकिन आपकी वजह से 2047 का जो भविष्य आपके हाथ में सुरक्षित है। और मैं अगर सुब्बाराव जी का नाम नहीं लूं तो मैं समझता हूं कि मैं सही नहीं कर रहा हूं। तो आदरणीय सुब्बाराव जी ने उन्होंने बैंक की स्थापना की और उनका क्या विजन रहा होगा। आज उनका छोटा सा पौधा उनका लगाया हुआ आज वट वृक्ष के रूप में है, और देश के शीर्ष बैंकों में उनका नाम है, और कनरा बैंक उनमें सर्वोपरि है। आज उनको कितना शांति मिल रही होगी कि उनका कितना विजन रहा होगा। और मैं उनकी कुछ लाइनों के साथ मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा। जो उन्होंने कहा, (1906) में जब ये इसका स्थापना हुई थी, उस समय उन्होंने एक सरल शब्दों में एक वाक्य कहा था, मैं आज यहां दोहराना चाहूंगा। ए गुड बैंक इज नॉट ओनली द फाइनेंशियल हर्ट ऑफ द कम्युनिटी, ए गुड बैंक इज नॉट द ओनली द फाइनेंशियल हर्ट ऑफ द कम्युनिटी, बट आल्सो one with an obligation of helping in every possible manner to improve the economic condition of the common people. साधारण आदमी को, जीवन को आप उस स्तर को आगे बढ़ाने का ये आपका कर्तव्य, ये योगदान है, और यही मैं समझाऊंगा ये मूल मंत्र आदरणीय सुब्बाराव जी का आप पालन करेंगे, करते रहेंगे। और फिर मैं मोहन कुमटाकर जी का जो एक कर्मचारियों की जो निष्ठा कैसी होती है, हम तो मोहन कुमटाकर जी को देखकर हमें लगता है कितना कमिटमेंट है, कितनी निष्ठा से ये काम करते रहे बिना लगन के। नींव का पत्थर जो दिखाई नहीं पड़ता है, और ऐसे कई आपके जो कर्मचारी आज यहाँ विराजमान हैं, उन सबको मैं प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए और आयोजकों का पुनः धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। और आपको बहुत बहुत इस सम्मेलन की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी अच्छी अच्छी चर्चाएं होगी 2 दिन तक, और सब लोग इसमें भाग लेंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मोदी को सपने पूरा करने में आप चर्चाएं करेंगे और कुछ योजना बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। Thank you, Sirayoji, for your inspiring words and guiding us as how we bankers can bring the changes in the society through inculcating and educating the common man of financial discipline and stability. Friends, now it is the most awaited agenda of our today's program,
it is my privilege and pleasure to invite our beloved MD and CEO to address as Canarites. Honorable Member of Parliament, Shri Lahar Singh Sirivasa, Dhanyawad sir, and the dignitaries sitting on the dais and off the dais, and my friend Mohan Kumtakar, and all my Canarites. First of all, my sincere thanks to all of you for inviting me as a chief guest and giving me an opportunity to interact with my Canara family members. Thank you, sir. And I congratulate each one of you on your 10th General Body and All India Conference. And I wish you a grand success this meeting, and there will be a meaningful deliberations in your business session once this function is over, and you will come out with some successful suggestions for the bank management to implement for the benefit of the country as well as our family members. We always say we have completed 118 years. Our organization is 118 years old, and it was 1906. Or Amambal Subbarao Pai was started this banking. Really, it's a great pleasure representing an organization which has completed more than 100 years. In one meeting, I heard that our ED is to share that in India, only 31 such type of organizations are there which is completed more than 100 years. And globally also it is only 130 or 150 the range. The organizations are there which are sustained for more than 100 years. We all should feel that we are fortunate to represent such a great organization. But at the same time, we also should feel that we have a responsibility on our shoulder. When Bina and our Kumtakar sir has come and requested me to participate in that, and they asked me to speak in front of you. So I told them, I'm not an orator, because generally you are all familiar with the BMS leaders, they are all very orators. But I am not an orator, I am an administrator. So I may not able to speak you to impress. Then they have told, no problem, sir, whatever you feel, you can speak. Then again I told, generally I avoid speaking in the public meetings because I speak from heart, which generally it is not good when you want to speak from the heart. The meeting will have some formalities, some protocols, which I generally don't follow. When I have to speak, I'll speak only from heart. Otherwise, chupchap baitunga. Hai na? I don't have the other version in my character. So if I have to speak, I have to speak from my heart. So my next few minutes, whatever I share with you, believe me that I'll speak from my heart. You are all, generally when I joined my career as a clerk, let me say as a worker, hai na? Because the organization name is Canara Bank Workers Organization. I, along with all the workers, used to think that we should have enough representation to represent our genuine causes at the helm of affairs. Of course, you have from your organization a representatives, capable leaders. But you should remember that now the first time you have your representative in the management side in the industry, that is your MD. Your MD is a worker. He is representing you on the management side. He knows what the workers requires. It's not that I am representing only the Canara Bank top management. I am representing the IBA as a management committee member
So your worker now is a part of the number one organization in the industry, that is IBA. So you have ample representation. You should feel safe, secured. Under such circumstances, all your interest will be taken care. But my first and foremost responsibility is, shall we celebrate 118 years old and complete our tenure? Keep on speaking about our past? Shall we complete our tenure comfortably? Or shall we believe that it's an opportunity for us, a worker heading a bank with 118 years old, he should construct this bank for next 118 years. Which one is my job? I felt it is, my second one is my job. It's not that the celebrating 118 years and completing my tenure on the functional mode. But instead of that, if I can make my tenure so successful and I can ensure that this organization will continue for another 118 years, that's I felt that I can give it back to this a great organization, and I can give it back to the Amambal Subbarao Paisar, the real, what the dedication, what we can give it back. That's what I am doing for last 1 year. You may find it sometimes some of my decisions are very tough, but it is in the interest of the organization. It is in the interest of the next generation. It is in the interest of the not only the 84,000 family members, lakhs and lakhs of shareholders and their family members. So almost more than 1 crore investors are investing in our bank. Is it not our responsibility to take care of that investors? There are more than 11 crores people are dealing with us as a customers. Is it not our responsibility to take care of that 11 crores? That's the broad-mindedness that your top management is working. First of all, let me say my sincere thanks to the current government, because we are not supposed to take the names, we don't take the names. Had I been that the current government transparent policy in selecting the highest positions in the country is not implemented vigorously, now your worker couldn't have been represented you at the helm of affairs as an MD. The credit goes to this government because they ensured the transparency. They ensured every the centimeter of this process, the transparency. A worker who joined as a worker and now representing this industry as a MD and CEO. So my sincere thanks to that government for giving me this opportunity. But when they ensured such a transparency in selection of the top management or the MD and EDs, don't we think that it is our responsibility that we also should ensure the same transparency in our every sphere of activities? That's what your MD is doing now in your bank. That's what I can give it back to this government who has made me as a CEO. Without afraiding the pressures, without afraiding or succumbing the relatives or the friends or the so-called your coterie members or whatever you call it as. I am so transparent and so courageous in taking the decisions. And I will be like this because I got an opportunity to represent all of you by a transparent government. So that is my responsibility to ensure that the transparency. And another thing what I want to share it you, we all undermine ourselves. When I joined the bank in 88, 89, I was posted in the one rural branch. One district collector has visited my branch. Then he went to the cabin, he met the branch head. Can you imagine afterwards whom he has asked to meet? He asked to meet the cashier. He knows only these two names in the banking.
One is branch manager, one is cashier. We are all representing the cashier community. So we are not nowhere a smaller role to play in this banking industry. Even a district collector recognizes you, your role in this bank. As our Honorable Member of Parliament sir has told that the people does not know about your RMs, your circle heads, your GMs, your EDs, your MD. But the people recognize the people who are sitting at the counters because they are the relation maintaining the people. They are our representatives to establish a strong bond between the bank and the customer. And we are all fortunate to be representing that. When we reported here, we realized, you might have had only hard decisions taken by your MD, because it will not percolate to you how your MD is human being, how humanity he works. But that I cannot publish anywhere to publicize what they actually we concern about you. How many people you know that when a gunman was done by or killed, not killed, it's attacked by a robbery, or the culprit, whoever is there with a gun. And our ED has physically visited that branch in the Bihar. And he spoke to the government officials and the hospital superintendent, and we ensured that he comes back alive. How many people can believe you when we say that this much utmost care we take care of the people? Do you think that we are not having any work? But we prioritize. Our staff members' life is our priority. In front of that, everything is small. When we reported in the bank, I have seen almost 240 applications are pending for filling up that compassionate recruitment, compassionate filling up that vacancies. It was not filled for several years. Fortunately, I got an opportunity to report before commencing the financial year on February 7th. As per your policy, the MD is empowered to fill the vacancies if 5% of that projected next year or the current year recruitment subjected for the award staff. When we have seen those applications, we have shortlisted 56 applications where the spouse is ready to work, irrespective of her age, even if it is 50 years. In those 56, whatever the eligible applications based on the priority, within that 5%, we completed that recruitment and we are given the appointment from February 7th to March 31st, within 40 days. On whatever the left out applications, it has been completed in the April month itself, because I got the quota of the next financial year. So out of 56, we have given appointments for 52. Now 4 more applications are left out. Whatever the applications current year we got, those applications are with me. That's why to have to recruit these so that there should not be any pendency. We have a history of in this bank to recruit the clerks are only 200 or 300. This time we have given our intent to the IBPS, whatever that's their organization, for 1,000 clerks recruitment. It's not that I can recruit the clerks 1,000. I know that because they are the people, they can bring the customer service to this bank. We have increased that 1,000 vacancies. Simultaneously, subconsciously, I have you can say that it's little in favor of those needy people. If I can recruit 1,000 people, if a 5%, I can give 50 such applications, whatever the pending with us, and immediately I can fill that employment. Is it not a humanity?
As Kumtakar has told that the BMS members never bothered about petty chai, allowance and all those things. That's why I don't want to discuss about whatever the monetary benefits I extended to all of you within just 1 year. I want to tell you only the things where it is required. There is an ex gratia who are all died. But many of your income, their family incomes does not permit to sanction the ex gratia. Because they will be debarred because of their family members' independent income. Is the criteria. When that note comes, I asked them, how many such applications are there? Sir, out of 250, if you remove that 56, the approximately 200 applications are there. Most of these are HKPs or the award staff, some are in the officers. Then what is the maximum eligibility we can give? They told us we can give up to 7 lakhs. I calculated and it comes only the 14 crores. When we are earning, when we have taken a task of making our bank net profit 20,000 crores in 3 years, 14 crores is not a big amount to meet that. So I requested them without deviating the rules, try to, if at all, if we can interpret in favor of the staff, try to interpret in favor of staff and see that everybody will get this ex gratia. When recently I became a member in the, after MD, became a member in that your PF, the board who maintains that PF fund. When I seen that in the only one meeting I attended so far, fortunately that meeting was finalization of that balance sheet. In that balance sheet I have seen that there is a surplus of 12 crores. I asked what this surplus. They say that for emergencies we kept. Again, my question is, what is that emergencies you get? You should work on no profit, no loss. What emergency you will get it? Then there is no answer. Then I told them that hereafterwards, every pie should be paid back to employees by giving a higher rate of interest. And this time, that's why we are offering you at 8% first time in the history of your bank. Rate of interest on your PF. How many people knows about that? Your top management so deeply involved in the welfare of your people. But the general impression comes to you, the many times Bina asked, why the people think about you so bad. Then I told her, it's not my job to say that I am good. I am here with a task. I'll complete the task. My task is to take care of my 84,000 employees' life and to take care of my 78,000 retired employees and to take care of my lakhs and lakhs of investors who invested their hard-earned money in this bank, that we will give wealth to them. And I'll ensure that these lives have been taken care during my tenure. Whether I am doing that or not, just in one sentence I want to complete to you before concluding, because I don't want to take much of your time. When I taken the charge with the help of all our top management, our share price was 283 rupees. Now it has crossed 600 in just 1 year. Our net worth, that is called market cap of this bank, when I took the charge, it was 48,000 crores. If someone wants to buy this bank, they have to pay 48,000 to the government and or the other stakeholders, and they can buy this bank. And within 1 year, we made this bank value as 1,10,000 crores. Even now, someone wants to sell or someone wants to buy, they have to pay 1,10,000. Generally, you don't find the buyer for such an amount. Are we not ensuring that you are in the public sector? That's the safety we are taking care. Whoever is relying on this bank, whether they are the staff, customers, or even the stakeholders, we ensure that their life is safe, their future is safe in this, the present
management hands. Finally, whenever I go, because myself and wife, we both only stay. Our children are settled or they are in the hostel somewhere. And the bank has given so big bungalow. And I personally believe that we both believe that it is a big jail for us. Because we are not habituated for such a big bungalow. And whenever I goes out on the job, my wife requests me to take her along with me. But I could not and I cannot. The reason behind is, I have to pay her ticket wherever I go. But for me, bank will give and my salary does not permit for that. That's the management you have. Trust on that. Give your best service to your customer. Ultimately, your customer is your God. Never forget your customer. If you forget your customer, not the Canara Bank, no bank will have future. Thank you, Varanda. Thank you so much, sir. Actually, I wanted to tell you that we are fortunate to have an opportunity to listen to your words, which is thought-provoking and motivational. But I changed my sentence. We are fortunate to listen to your Man Ki Baat. Friends, may we once again give the assurance of the implementation of the mantra of our organization CBWO as Nation First, Rashtra Hiत, Bank Next, Udyog Hit, and Union Last, Shramik Hit. Sir, we certainly assure you, your words goes a long way in inspiring us to strive hard and achieve more for our beloved Canara Bank. Friends, a successful team doesn't limit itself by the captain. It will have its successful team with that. And one of the successful team member in our captain's ship is our HR face, our beloved ED sir, Sri Ashok Chandra ji. I request him to address we Canarites. Namaskar, good morning to all of you. I think आप ऑनरेबल सिरोहा साहब को सुनने के बाद एंड एमडी एंड सीईओ राजू साहब को सुनने के बाद आई थिंक मुझे सुनने की जरूरत आप लोगों को नहीं थी. आई थिंक कुमताकर साहब ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एंड ही आस्क्ड मी टू स्पीक. सो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री लहर सिंह सिरोया साहब, our respected MD and CEO Sri Satyanarayana Raju sir, all other dignitaries on dais, off the dais, Mohan Kumtakar sahab, and all my Canara Bank family who are present here. मैं विनोद जी का नाम स्पेशल लेना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस किया है अपनी सीट मेरे लिए. एंड एज ए लाइटर अगर नोट पे देखा जाए तो आज के डेट में सीट सैक्रिफाइस करना बहुत मुश्किल है. सो थैंक यू वेरी मच विनोद जी. द मोमेंट आई एंटर्ड इन द हॉल, I felt the sparkling and scintillating energy inside the hall. And we always feel that you are the force for Canara Bank. You are the source of energy for Canara Bank. And today, if bank is proud of the business, the bank is proud of the market capitalization, the bank is proud of our net worth, the bank is proud of our net profit, the credit goes to each and every Canarites, along with the customers, 11 crore customers who are banking with us. मैं केवल दो पार्ट यहाँ पे टच करूंगा एंड मैं लिबर्टी ले रहा हूँ सिरोहा साहब ने जो टच किया that as a banker, what is your responsibility? Very important thing he has touched. And one point I will take from our MD and CEO sahab. The first thing which
our Honorable MP Sahab has mentioned that we are the custodian of public money and we have very, very high responsibility to take care of that money which the public has parked with us. And today, if the Canara Bank has crossed 100 years and more so it is 118 years, it is because of the value system which the organization is having. And if the Canara Bank is to survive for another centuries, I think this value system has to be maintained. Each one of you has to take care of the value system, the integrity and the responsibility which the customers has soldiered on us. That is very, very important. And my request to all of you, through all of you, the message goes to the entire Canara Bank family who is working in the branches, that at no point of time we should deviate from our system and processes. We should deviate from our value system. That is very, very important. The respect and regard which our organization is commanding in the society, it is because of that value system. So let us work hard on that and ensure that we maintain the sanctity at the branches. Second important thing which our Raju Sahab mentioned, that as a banker, and that to a Canara Bank, I think we command the respect and regard in the society. How this respect and regard comes? It is because of our discipline, it is because of our honesty, it is because of our sincerity. If few these qualities are there, people in the society is going to respect and regard to you. And I will just quote one small story. And I will ask from all of you, which is the heaviest animal in the jungle? Which is the heaviest animal in the jungle? Elephant? Which is the fastest animal in the jungle? Cheetah. All of you will agree that cheetah is the fastest animal. And which is the tallest animal? Giraffe. Yes, giraffe is the tallest animal. But who is the king of the jungle? He is not having any of these qualities. He is not the tallest. He is not the heaviest. He is not the fastest. But he is the king of the jungle. Why he is king of the jungle? Because of his attitude. He feels himself that I am the king of this jungle. Now, my request to all of the Canarites, that all of you should feel that you are the king in the banking industry. You are the king wherever you are working in the domain areas. Because in the field, people do not recognize MD, ED, CGM, GM. They are not bothered. It is the post at the head office. The people interact with the staff members. The people interact with the branch managers. So all of you should feel empowered. You should change your attitude and you should believe that you are the lion in your domain areas. And the attitude of that lion, I think that killing spirit you should develop. If you develop that killing spirit, I think this 20 lakh crore or 22 lakh crore of business or this 20 lakh crore of net profit which we have thought of by March 26 and all other different parameters, it will become a very, very small number. Let us work on the quality, let us work on the value system, let us work on the integrity and sanctity at the branch level. I think Sir has already mentioned that bank has done a lot of things. We are taking care of each and every employee in the organization, and I can assure you, for us, employee first, business next. That is the priority which we are giving in the organization. With this few words, once again, thank you very much for giving me this opportunity. In fact, I came here to just to listen all of you and participate and interact with all of you. So thank you very much. Thank you, Ashok Chandra ji. It was more a training session for us,
actually how we have to take care of our sessions while we will be taking care of our customers. Complaints first, business next. Actually, I just remember one incident when I joined in my branch. My one customer came, and a senior citizen customer, he came and asked me, who is the manager of your branch? I told, he was Mr. P.I. Vasudevan, my first manager. I told P.I. Vasudevan. Then he asked me, he was around some 86 plus, that customer, senior citizen customer. He asked me, who is the manager in your section? Then I was very much perplexed what to answer, like, you do not know who is the manager in your section. I told there is no manager in section, like, because it is a small branch. Then you are not deserved to be working in Canara Bank. Then I was like, sir, what I have done anything wrong? See, they will call us Kutti. Kutti means a small girl or boy in our area. Kutti, you are the manager in your section. You should have that attitude and you should have that belief. So whenever someone will come and ask you who is the manager in your section, you are the manager. So you should have that belongingness and ownership of your bank. So from that day onwards, whenever our juniors comes also, we will be teaching them like that only. And luckily, our organization also is telling all our members that responsibility comes first, then comes your right. Thank you, sir. Once again, you have reiterated the guidelines and the mantra what our organization is teaching to our members. Thank you very much, sir. Now I request Sri Ramnath Kiniji, Sahaprabhari BMS, who has come all the way from Mumbai here to convey his wishes for our conference. Actually, it is a hectic journey for him. Yesterday, he was part of that settlements signing and all from Mumbai directly. He is coming to wish best wishes for our conference. Kiniji. भारत माता की, भारत माता की, वंदे, CBWO जिंदाबाद, CBWO जिंदाबाद, BMS जिंदाबाद, धन्यवाद। बीना जी ने कहा कि इट वॉज वेरी एक्टिव डे yesterday। सिर्फ yesterday नहीं, पिछले 6 महीने से हम लोग बहुत एक्टिव है। हमारा गला भी बैठा है, कल लोगों को इकट्ठा रखते रखते तो थोड़ा आवाज बैठ गया है। सर्वप्रथम मैं श्रद्धेय दत्तोपंत धेंगड़ी जी को और श्री अमेबल सुब्बाराव पई माम को नमस्कार करते हुए अभिवादन करते मैं मेरा भाषण शुरुआत करूंगा। हाँ, मेरे गुरु एनए प्रभु जो सिंडिकेट बैंक से थे, वो 2 महीने पहले गुजर गए। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, उनका नाम याद दिया है। मुझे एक अच्छा लीडर बनाने में उनका बहुत हाथ है। अभी इतना इंस्पायरिंग स्पीच देने के बाद पहले तो मैं उनका नाम लेता हूं। आज के डायस पे बैठे हुए राज्यसभा सांसद लक्ष्मण लहर सिंह सिरोये जी, आप तो नॉर्मल हमारे जैसे बात करते हैं, तो इसलिए आपको पहला सैल्यूट। यू आर फ्रॉम द पीपल, पब्लिक से आप है, तो आपको 400 प्लस आने के लिए मैं पहले बधाई देता हूं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी को सपोर्ट करती है। दूसरा, हमारे एमडी और सीयू, उन्होंने कहा कि आई एम नॉट ए गुड स्पीकर। सर, यू आर ए वेरी वेरी गुड स्पीकर। यू आर कम फ्रॉम डाउन टू। मुझे ऐसा लगा कि कभी कई मोड़ पे ये कई यूनियन लीडर रह चुके होंगे, ऐसा मुझे लगा। सो यू आर डाउन टू अर्थ सर, वेरी सैल्यूट टू यू। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक चंद्रा जी तो मेरे बैंक से थे, सीजीएम बन के यहाँ ईडी आए, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और आज एनओबीडब्ल्यू के अध्यक्ष मैं अशोक चंद्रा जी को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनको याद किया। मैंने खुद कहा आप ऊपर बैठिए, आप एनओबीडब्ल्यू बोलो तो हमारी संगठन का ये नाक होता है, तो उन्होंने सैक्रिफाइस करके वहां बैठे, उनका भी मैं नाम लेता हूँ। कैनरा बैंक ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी आनंद अय्यप्पम जी, नंदी जी, अध्यक्ष नंदी जी, और आप सभी लोग, मेरे कैनरा बैंक के फाइटर शेर, अभी इन्होंने कहा शेर, यस
we are share. We build a nation, we build a bank, and we bring the profit for the bank. Salute to you all. आखिरी में मेरे परम मित्र मोहन कुमटाकर जी, हमारी जोड़ी, वो कैनरा बैंक में जनरल सेक्रेटरी थे बहुत सालों तक, मैं कारपोरेशन बैंक में जनरल सेक्रेटरी था, फिर वो जनरल सेक्रेटरी बने एनओडब्ल्यू के, मैं अध्यक्ष बना एनओडब्ल्यू का, 1 महीने में दोनों रिटायर हो गए, दोनों आउट। हमारे यह संस्था में 60 इयर्स के बाद किसी को स्थान नहीं। क्यों? इसका अर्थ यह है कि नए ब्लड, न्यू ब्लड आना है। बीएमएस में एक प्रथा अभी नई 4 साल में आई है कि डिस्ट्रिक्ट में 45 इयर्स के ऊपर किसी को पद नहीं है और फेडरेशन में 60 के ऊपर पद नहीं है। तो कुमटाकर इज आउट, रामनाथ किडी इज आउट। हम लोग अभी मार्गदर्शन की भूमिका में है, उनको भी सैलरी नहीं, पेंशन छोड़ के, और मुझे भी सैलरी नहीं है, तो हम आपके सेवा में है। अच्छा बायपार्टेट दिया है, आपके चेहरे पे बहुत खुशी है। सिर्फ 5 दिन फ्राइडे हॉलीडे वो नहीं मिला है, वो मिलेगा। हम पिछले 6 महीने, आपके एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूँ। हम लोग मार्च और अप्रैल में, ये बायपार्टेट शुरू नहीं हुआ था, हमने मैडम को जाके, हमारी डेलीगेशन टीम इंक्लूडिंग मी, हम लोग मिले, उनको बताया बैंकिंग में बायपार्टेट कैसा होता है। मैडम को तो मालूम नहीं ना, बताना पड़ेगा ना, मिनिस्टर क्या आते जाते हैं, लेकिन मैडम का इतना शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने पिकअप किया। 2 मीटिंग में हमने बताया ये बैंकों में यूनियन लीडर कैसे बनाते हैं पैसा, मेंबरों को कैसे लूटते हैं। 3 साल अभी राजू सर चेयरमैन है, एमडी है, सीईओ है, इनको बहुत काम रहता है। इनको काम छोड़ के मुंबई आना पड़ता है, 2 घंटे की मीटिंग, फिर चले जाते हैं। इनका खर्चा, यूनियन लीडर का खर्चा सब आईबीए देता है, आईबीए जेब से नहीं देता है, आप ही के प्रॉफिट से जाता है, सभी बैंकों का पैसा वहां जाता है। तो ये वेस्टेज होता था। ऐसा है क्या? ऐसे तो जेटली जी ने भी सुना था, बट इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन मैडम ने बराबर सुना। मैडम ने वहीं से विवेक जोशी को फोन किया, जोशी जी स्टार्ट नेगोशिएशन। मैं इसे नेगोशिएशन चार्ज किया। 7 मीटिंग में, 7 मीटिंग में स्टार्टेड विथ 13%, नेवर इन द हिस्ट्री। ये गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो शुरुआत की है और मैडम ने जो हमारा साथ दिया है, उसके लिए सैल्यूट है। हमने, हमारा एक बीएमएस का तत्व है सर, अच्छा काम किया है एमडी ने, हम सराहते हैं, और कहीं पूरा करते हैं तो हम उनको बोल भी देते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा 48,000 करोड़ से 1,10,000 करोड़ तक लाने के लिए आप सभी ने इनको हेल्प किया है। आप फ्रंट रनर है, और ये हमारे शिप के कैप्टन है सर, आपको बहुत बहुत सलाम। सेक्यूर इसको और आगे बढ़ाएंगे हमारे लोग। यहाँ मैं एग्जाम्पल हूँ, मेरा नेता जो अनंत प्रभु एग्जाम्पल है। 10 से 5 तक काम किया मैं, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था मैं, 10 to 5 काम करके एनओडब्ल्यू का काम किया है। तो वी आर ऑलवेज ए गुड वर्कर, वी वर्क फॉर द नेशन। उसमें पहला काम इन्होंने कुमटाकर ने, पहला देश, फिर ऑर्गेनाइजेशन यानी बैंक जो हमको खाना देता है, उसके बाद में हमारी फैमिली, फिर यूनियन। ट्रेड यूनियन इज लास्ट फॉर अस, और ट्रेड यूनियन में भी स्ट्राइक इज द लास्ट हथियार, हमारा हथियार लास्ट है ये, कम्युनिस्टों के जैसा नहीं। आज मैं आपको बताता हूँ, 3 साल अभी 4था साल है, मैं प्रभारी हूँ बैंकिंग का। कारपोरेशन बैंक की यूनियन, आईबॉक की पूरी यूनियन लाने में मैं समर्थ हुआ हूँ। पूरी यूनियन आई है, आज हमारे पास लोग आ रहे हैं। मेहनत करना होगा। इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक जो 2019 में सब ऑफिसर है, आईबॉक के पास थी, हमारे पास आई है, ये हमारा क्रेडिट है। इंडियन बैंक में वर्कमैन असम से एक मेंबर नहीं आता था। यूको बैंक में ऑफिसर, एआईबीओ का 83% लोग हमारे पास आए। आज हमारे पास लोग आ रहे हैं। आप लोग घूमो, आप लोग जाओ, आप लोग ब्रांच विजिट करो, आप देशभक्त हो। घर में बैठ, मैं तो आज ही प्रेसिडेंट बन गया, मैं तो अभी हो गया जनरल सेक्रेटरी, बस मेरा काम हो गया, 3 साल के लिए मैं बन नहीं। मोहन कुमटाकर जी ने कितना प्रवास किया वो देखो, हिस्ट्री देखो। रामनाथ किडी ने क्या किया वो छोड़ो, मेरा बैंक में मैं देख लूंगा। लेकिन आज भी मैं प्रभारी होने के बाद, पिछले वीक में यूनियन बैंक, सेंट्रल कॉर्पोरेशन बैंक में मैं गया था सतीश शेट्टी के साथ। हम 2 दिन का विजिट किया, 51 मेंबर्स आया। पिछले महीने में मुंबई में विजिट किया, एफजीओ में 67 मेंबर्स आए। घूमेंगे तो मेंबर्स मिलेगा। देश, मोदी जी देश बना रहे हैं,
5वां जीडीपी बनाया, तीसरे जीडीपी के लिए लड़ रहे आप और हम, और ये लोग मिलके ही इसको जीडीपी 3 में लाएंगे। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा और हर साल में काम करना पड़ेगा। वैसे ही काम करके बहुत प्रॉफिट आया है, सर ने बताया बहुत कुछ दिया है, लेकिन कुछ भी दिएगा तो आज भी 17% हमको कम लगता है, और लगना भी चाहिए। वी कैनॉट से बेस्ट, 1 लाख करोड़ प्रॉफिट में 17% इज अ बिग अमाउंट, इट्स अ गुड सेटलमेंट, बट इट इज नॉट द बेस्ट सेटलमेंट। मैं अगर ट्रेड यूनियन लीडर होकर बेस्ट बोलेगा तो चलेगा नहीं, देयर इज नो एंड। तो सर को मैं विनती करूंगा, जैसा जैसा प्रॉफिट बढ़ता है वैसा वैसा नए नए हेड बना के वेलफेयर दीजिए। पगार तो आप नहीं बढ़ा सकते, पगार तो बढ़ गया अभी। और निर्मला सीतारमण जी ने एक वर्ड बोला कि अगला बाइपर्टेट अक्टूबर में 27 को खत्म होगा, आप लोग चार्टर जनवरी में दो। आई विल सी दैट इफ शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर, शी टोल्ड लाइक दैट, वो हम ब्रैकेट में बोलते हैं। मैं फरवरी में आपका बाइपर्टेट शुरू करूंगा और अक्टूबर एंड के पहले चार्टर साइन होएगा, 13th बाइपर्टेट। यह हमको, इसलिए हम इस गवर्नमेंट को सैल्यूट करना चाहिए। मैडम को धन्यवाद दिए बगैर हम लोग नहीं रहेंगे। बार बार 6 बार गए हम, एक दिन पहले भी गए हम, बाइपर्टेट का डेट आया नहीं था। हम भागवत कराड़ जी को मिले, भागवत कराड़ जी बोले क्या है, मेरे को बहुत गाली देते हैं, ये मेथ वाले बोलते हैं काम नहीं करते, काम नहीं करते। अभी आप समीर शुक्ला ज्वाइंट सेक्रेटरी, उनको बिठाया, उनकी एक टीम थी। आज इनका जो है वो सब करा दो, सब करा दो। बोला तो समीर करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। तो डेट नहीं था, साइनिंग का डेट मालूम नहीं, लोगों को चर्चा चल रहा साइन कब होगा, साइन कब, 5 डेज कब मिलेगा। तो उस दिन हम लोग उसी के बारे में 1 तारीख को गए, 2 तारीख को गए थे हम। 2 तारीख के बाद 3rd को डेट आया 11th चेन्नई। जैसे ही मैडम को हमने बताया, मैडम 11th दिया, आपका सरकार का वो कुछ करना है ना बंद, तो मैडम ने बोला नो, प्रीपोन इट, 8 तारीख को किया। मैडम हैज टेकन सैल्यूट टू निर्मला सीतारमण को सैल्यूट करना मांगता है, बहुत बारीकी से हमारा ये किया। और बीएमएस को, स्पेशली बीएमएस को बहुत रिस्पेक्ट किया है, जहां जहां मदद करना है वहां किया है। हर एक यूनिट से अभी हमको मेंबरशिप आ रही है, हम देश के लिए है, उनको भी मालूम है, और उनका अभी 400 का लक्ष्य है। तो आप लोग को मैं यहाँ पॉलिटिकली नहीं बोलूंगा, इनडायरेक्टली बोलूंगा, आप इनको मदद करिए। 400 पार, अब की बार 400 पार होना चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ, ಏನು 10th ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ BMSನ ಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಲೆಹರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಅಶೋಕ್ ಸೇನ್ ರಾಜು ಇರ್ಬೋದು, ರಾಮನಾಥ್ ಕಿಣಿ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಬ್ಬರು ಫೌಂಡರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು BMS ಫೌಂಡರ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೌಂಡರ್. ಈ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆ, ಈ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು, ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ, ದೇಶಭಕ್ತ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಹಿತ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಿತ. ಇವತ್ತು ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ಪರಮ ವೈಭವ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಗುರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಂತ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರಲಿ,
ಯಾವುದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ BMS ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ದೇಶವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗುವತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ರೇಂಜ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನ ಸ್ವಂತ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದಂತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಇವತ್ತು. ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಂದಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಗುರು ಸ್ಥಾನದತ್ತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸದಸ್ಯರು, BMS ನ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೂ ಟೂರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಮೆಂಬರ್ನು ಕೂಡ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ BMS ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಕರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು BMS ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಂಬರ್ 1 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಗೆ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, Prakash ji, for your wishes on behalf of BMS for our conference. Friends, now we come to the concluding part of our inaugural session. I would like to invite Sri Mahendra Nandi, President of our CBWO, to propose vote of thanks. Respected dignitaries on the dais, our respected Sri Lahar Singh ji, our beloved MD and CEO Sri Satyanarayana Raju sir ji, and our Executive Director Sri Ashok Chandra ji. I am before you to bring the curtain down of this inaugural session by proposing vote of thanks. To start with, I thank on my personal behalf and on behalf of Canara Bank Workers Organization to Sri Lahar Singh ji, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, for sparing his valuable time and inaugurating our conference by your words of wisdom. Thank you, sir. It is my proud pleasure to thank the most successful and dynamic MD and CEO of our bank, Sri Satyanarayana Raju sir ji, for your thought-provoking speech, which I am sure has boosted the morale of workforce. And thank you once again, sir. It's my pleasure to thank who guided us to be a lion in banking industry, Sri Ashok Chandra sir ji. Thank you very much, sir. My special thanks to Sri Ramnath Kini ji, Sah-Prabhari BMS, Financial Sector, Sri K. Vinod Kumar ji, President NOBW, and Sri N.K. Prabhu ji, President Karnataka State BMS. Last but not the least, I will be failing in my duties if I do not thank all the dignitaries who made this conference a grand and memorable success. Thank you one and all. Jai Bharat, Jai Karnataka. Thank you, Nandi ji. As you are all aware, our program starts with national song and concludes with national anthem. So all are requested to sing our national anthem in chorus, which will be led by Srimati Jayalakshmi Ganesh. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे, तव शुभाशिष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। Once again, memorable one. Bharat Mata ki, Bharat Mata ki, Vande, Vande. राइट, हाँ राइट, आगरा सर्कल आइए, आगरा सर्कल जाइए, सर्कल देन प्लीज कम, लखनऊ सर्कल, राइट, लखनऊ चलिए, लखनऊ, हाँ हुबली सर्कल, उससे पहले हुबली बड़ा है ना, चंडीगढ़ आ गया, हाँ लखनऊ, थैंक यू, हाँ चंडीगढ़ आइए, आप कौन, करनाल, हाँ करनाल आगे क्या, हाँ करनाल, चंडीगढ़, चंडीगढ़ सर्कल चलिए, चंडीगढ़, थैंक यू, चंडीगढ़ जाइए, राइट, चंडीगढ़ हो गया, त्रिवेंद्रम, छोटा छोटा है ना, त्रिवेंद्रम, पटना, विजयवाड़ा आइए, बिगर सर्कल, मिली पर पॉसिबल टू बैच, हुबली, हुबली सर्कल को, हुबली सर्कल, इट्स ए बिग बैच, हुबली, सेकेंड बैच हुबली, लेडीज, ओके हो गया, चलिए चलिए बोलिए, हुबली लेडीज, हुबली लेडीज है दादा, ओके थैंक यू, हाँ नेक्स्ट बैच बैंगलोर, इमीडिएटली नेक्स्ट बैच, गो गो, हाँ यू बैंगलोर बैच, बैंगलोर